अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइबिंग इट, लाइकिंग इट एंड शेयरिंग इट। अभी हम दोहा की गलियों सड़कों पे ही फिर रहे हैं और आपको एक चीज़ देख के कितनी हैरानगी नहीं हो रही कि कितनी सफाई है यहाँ पे। मुझे कागज़ का क्या एक टुकड़ा भी नज़र नहीं आया अपने इस पूरे विज़िट में, और ना ही मुझे कोई ऐसा नज़र आया जो कि कोई थूक रहा हो या कोई कंद फेंक रहा हो या कोई कचरा फेंक रहा हो। इवन बच्चे भी खा के अपनी चीज़ों को अपने पास ही रखते थे, और कहीं पे बाज़ार में, सड़कों पे, होटल में, कहीं पे भी मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो हम कह सकते हैं कि हम मुसलमान भी जो हैं अपने कंट्रीज़ को जैसे साफ़ रखते हैं, इस तरह हर मुसलमान को चाहिए कि अपने अपने कंट्रीज़ में अच्छे और सफाई, चूँकि निस्फ़ ईमान है तो उसका ख़्याल रखा करें। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, ये देखें। अब ये है म्यूज़ियम, इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम, बहुत बड़ा दोहा का म्यूज़ियम है। और ये देखिए यहाँ पे ये फ्री शटल होती है जो कि आने वाले विजिटर्स को फ्री में यहाँ तक लेके आती है, लेकिन फुल साइट सीइंग का मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है कि कुछ चार्ज करते हो, बट फॉर दिस म्यूज़ियम दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम जा रहे हैं नेशनल म्यूज़ियम की तरफ बढ़ रहे हैं, और ख़ूबसूरत म्यूज़ियम है ये, और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़, स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बियंस कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इतना खूबसूरत मंज़र, शाम 5 बजे से ये स्टार्ट हुआ और हमने यहाँ पे देखा कि सनसेट कितना ज़बरदस्त हो रहा है। और जो म्यूज़ियम है इसकी खूबसूरती तो है ही है अंदर से जो देखा जाए, और बाहर इतना खूबसूरत ट्रीज़ लगे हुए हैं, फ्लैग्स हैं, और इसको एक बहुत ज़बरदस्त कॉर्निश के तौर पे बनाया गया है इसके किनारे। और यहाँ पे जब हम साथ में स्काई स्क्रैपर्स वगैरह दिखाए थे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में, वो भी आपने देखे होंगे कि कितने ज़बरदस्त किस्म के हैं। मैं आपको इसके ऊपर से भी अभी दिखाऊंगी। ये 5 फ्लोर का म्यूज़ियम है और इसमें बेशुमार गैलरीज़ भी हैं, आर्ट गैलरीज़ भी हैं, और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। तो ये जो म्यूज़ियम है इसकी तारीख़ है, यहाँ पर बहुत से लोग फॉरेनर्स भी आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, जो ज्योग्राफी के टीचर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी कम हियर एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लाइक प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस म्यूज़ियम, एंड इट इज़ एस्टॉनिशिंग टू सी दैट कि मैं हैरान रह गई अंदर जाके कि असल वाले चीज़ें मौजूद थी जो कि हम किताबों में पढ़ा करते थे। उस दौर में हम चले गए कि हम कहते थे ये तो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, यहाँ तो वहाँ चीज़ें मौजूद थी। और ये वॉले पार्किंग वगैरह है, यहाँ के कुछ डेलीगेट्स भी आते हैं और यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं। तो हम भी आपको लेके चल रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ आर्ट, इस्लामिक आर्ट, राइट, इन दोहा। This is the door plaques from Baba Al Jannah Mosque.
This is a fragment of a horizontal sundial indicating hours and quarters of hours. This is the old fragment of a sundial placed vertically on the wall or left and the floor to determine. इससे नमाज का जो टाइम था वो डिटरमिन करते थे कुछ इस तरह से. फिजिकल सर्जन की कोई किताब है जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी है. Moroccan craftsman is deeply rooted in the country's rich history. Uploading this section. Traditional sounds of Morocco. Like this. Bracelet, Morocco. हेड पीस, ये सर पे बांधते हैं हेड पीस. एंकलेट्स. Pair of bracelets. Bridal costume with belt and balga shoes. Bridal, दुल्हन का लिबास. शूज, दुल्हन के शूज. इस तरह से दुल्हन तैयार होती है इनकी. ये ज्वेलरी पहनती है जैसे सर पे ताज है, इयररिंग्स हैं, हार है, कांटे हैं. Called of this one. It's भी bridal costume है. जी, तो अब हम म्यूज़ियम के अंदर हैं और मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि ये 7 किलोमीटर यानी कि 4.3 माइल्स का बना हुआ कॉर्निश है, जिस पे ये म्यूज़ियम बिल्ट अप है और इसका एरिया तकरीबन 4,80,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से है. टर्किश कंपनी बेतूर ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था एंड इज़ ओपन टू जनरल पब्लिक इन 2008. 2006 में बना था but after 2 years they opened for the general public and main building consists of 5 floors. इसीलिए हम ऊपर नीचे जा रहे हैं और हर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था कि हम देखते तो हमने ये कैफे भी देखना था जो कि मिया यानी म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट का अपना कैफे है जो कि बहुत जबरदस्त है. खैर हमने यहाँ से कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि हम बाहर देखना चाहे थे जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के फाउंटेन्स भी थे और बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहे थे जैसे कि बाहर बिल्डिंग्स एंड लाइट्स एंड एवरीथिंग.
यहाँ पे 18 से ज़्यादा जो 18 के करीब ही न्यूली रेनोवेटेड गैलरीज़ हैं, जो कि तकरीबन इतना ही जो मैंने आपको एरिया बताया है 4,80,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से कवरिंग एरिया है, जिस पे ये आर्ट गैलरीज़ बनाई गई हैं, जो कि 7वीं सदी से लेके 20वीं सदी तक का सफ़र जो है उसमें सारा आप कर सकते हो। और मैंने भी ये सफ़र 7वीं सदी से 20वीं सदी तक का इसी म्यूज़ियम के अंदर किया है, जो कि आपको मेरे थंबनेल से भी लग रहा होगा। So art from 7th to 20th century is very, very important, and you can explore the masterpieces of Islamic art from three continents. 3 आप बड़े आज़मों के जो मास्टरपीस ऑफ इस्लामिक आर्ट हैं, आपको यहाँ मिलेंगे। और उसमें 1400 साल पहले की जो भी हिस्ट्री है, और यहाँ पे जो भी उनके तकरीबन उनका 1400 साल पहले का जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मेटल वर्क की, सेरेमिक्स की, ज्वेलरी, वुड वर्क, टेक्सटाइल्स, ग्लास एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। And this is one of the most complete collection of Islamic artifacts with items originated not from only from like Middle East, it's like from Spain, Egypt, Iran, Iraq, Turkey, India and Central Asia. सो आप अंदाजा लगाएं कि ये म्यूजियम इसके अंदर का सेटअप और इतना वर्षा जो हेरिटेज इन्होंने संभाल के चलाया, और जो इतना यहाँ पे म्यूजियम में टूरिस्ट आते हैं। और मैं देख रही थी कि नेशनल जियोग्राफिक के या कुछ थे, वो भी वीडियोस बनाते हैं यहाँ पे आके। शुरू में आपने क्लिप भी देखा होगा जो कैमरामैन थे। तो यहाँ पे इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, यहाँ का आर्किटेक्चर और यहाँ की जो अंदर असल चीजें हैं। ये नहीं है कि कोई नकल चीजें हैं, जैसे कि बरे-सगीर के जो आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूट भी पढ़ा होगा जब वो तजारत करते थे। इसके अलावा यहाँ के हीरे, मोती जो मुगलों के इस दौर में ज़िंदा थे, जो मुगलों की आप हिस्ट्री पढ़ते हो, उसके अंदर ये सारी जो चीज़ें उन बादशाहों ने इस्तेमाल की हैं, ऑल आर राइट देयर एंड यू कैन सी एंड जस्ट इमेजिन कि आप जब उनको देखते हो तो आप उस तारीख में वापस चले जाते हो, जो हमने किताबों में पढ़ा था। और मैं जो-जो वो पढ़ रही थी, मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि आज मैं अपनी आँखों से इन सब चीज़ों को भी देख रही हूँ। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे एक ब्लू कुरान इंडिगो डाइड मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि 1000 साल पहले बना था। उसका एक पेज भी यहाँ पे मौजूद है। द मोस्ट इलैबोरेट कुरानिक इन दिस वर्ल्ड, लाइक बहुत कम मतलब आपको देखने का चीज़ें मिलेंगी जो कुरान के हवाले से यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुझे हदीस की किताबें भी नज़र आईं, और ओरिजिनल जिसको कहते हैं कि ये नहीं कि वो ओरिजिनल लिखी हुई, और फिजिशियंस की, उस दौर के डॉक्टरों की हाथों के नुस्खे। एंड दिस इज रियली रियली अमेजिंग कि आप ब्रॉड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल थीम्स में ऐसे चले जाते हो कि आपको हैरत होती है। सो कीप वॉचिंग एंड एंजॉय, एंड दिस इज लाइक द गोल्डन, आप देख रहे हैं कि किस तरह का है, और आप हैरत ज़दा रह जाएंगे चीज़ें देख के। एंड होप यू लाइक इट। दीवानी जामी।
भी नहीं मिला, नहीं मेरा पता। शाहजहाँ।